मिनिमाइज चाहिए जो बाजू में दिखाई देते हैं। मैंने क्या यूज किया गयो क्या कहीं है अब पीडीएफ से आपने कुछ आज मुझे आज है ना आई तो शेयरिंग करना दिखा दो शेयर करूं तो करूं यार तुझे तो हमारे में ना हो तो शेयरिंग स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग Good morning, friends. I hope you can see the screen. Okay. Good morning, all of you. So, as you know, we are starting with chapter 7, preparation of final account of sole proprietor. And if you read the unit 1, it is unit 1. Okay. Unit 1 says that it is about the non-manufacturing entities. It is about the non-manufacturing entities. Okay. So first of all, guys, let me know what do you mean by non-manufacturing entities. Please let me know what do you mean by non-manufacturing entities. Please let me know, guys. What do you know by non-manufacturing entities? Okay, this is about this non-manufacturing entities. Yes, guys, please tell me what do you mean by non-manufacturing entities? Okay, so this is the entities. Exactly, this is the entities who are not doing any type of manufacturing. This is the entities who are doing only trading or resale activities, right? Say for example, we are doing business of trading of shirt and t-shirt. So this entity just purchase shirt and t-shirt, okay, either from factory or wholesale market, and then they are selling the same shirt and t-shirt to the retailer or a direct customer. It means in this unit we are discussing final account of a sole proprietor of a non-manufacturing. It means they don't have any production cycle. They don't have any plant and machinery for production. They don't have any factory. They are just doing trading activities. Right, guys? In unit 2, when we'll start unit 2, in unit 2, we will learn final account of manufacturing entities. But at present, we are starting with final account of non-manufacturing entities. Non-manufacturing entities. So this entity do not involve in any type of production. Any type of production.
only purchase and sale. Okay, guys? Only purchase and sale. Okay. So ये वो बिजनेस है फ्रेंड्स, जहां पर वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, रीसेल करते हैं. ये लोग सिर्फ परचेज सेल करते हैं. इनका कोई फैक्ट्री नहीं है, इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, इनके पास कोई बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है. सो सम स्टूडेंट टेल सर प्लीज स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, सो आई कन्वर्ट इनटू हिंदी. ओके गाइस, नाउ आपने स्कूल लेवल पे सीखा दैट इन फाइनल अकाउंट्स वी आर प्रिपेयरिंग 3 accounts and statement basic. Trading, profit and loss account and balance sheet, right? Trading we are preparing for gross profit, P&L we are preparing for net profit, and balance sheet we are preparing for what? Tell me guys, why we are preparing balance sheet? Why we are preparing balance sheet? Be fast. Why we are preparing balance sheet? Yes guys. Why we are preparing balance sheet? Purpose. Yes, exactly. To find out or to understand or to analysis financial position of business. How much assets we have, how much liability we have. That's why preparing balance sheet. Absolutely correct. You are absolutely correct. Okay. So these 3 are basic. Fine. Now guys, in your module, if you see, these are the purposes. Okay. And these are the basic principles on which we are preparing this, which is not that much important. This is the important one with which we need to start. Okay, which is known as matching principle. Which is known as matching principle. Okay, this is a very important concept, friends, and ICI sometimes ask separately for short note. Okay, 4 to 6 marks. And apart from this, even though it is not part of exam, but this is very much important to understand before starting any question of this chapter. Before starting any question of this chapter, matching principle. And if you read the first para only, guys, if you refer the small first line, this line says very categorically, this principle demand that expenses incurred to earn the revenue should be properly matched. Should be properly matched. Should be properly matched. Okay. So, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है, हमें हमारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना है. हमें हमारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना है. दिस इज व्हाट दिस कंसेप्ट सेज. एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू. एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ revenue.
Now, friend, with revenue, you need to write two more words. With this revenue, you need to write two more words. Please write two more words with this revenue. With this revenue, you need to write two more words. Okay, remember very carefully, guys. Revenue or income or benefit. Two more words. Revenue or income or benefit. Okay. So now what is the final sentence? Expenses should be matched with revenue or income or benefit. Revenue should be matched with revenue or income or benefit. Okay. Now it will be more clear with the example. With the example. So guys, first let me know why you are passing the entry of closing stock and opening stock. Closing stock and opening stock. Why we need to pass the entry of opening stock and closing stock, right? Okay. The simple logic is that now, friend, see. You have a opening stock of 0 because ऐसा मान के चलो ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है. You purchase 100 units. It is a trading in units. Okay. You purchase 100 units. You sell 90 units. You sell 90 units. Now, if you don't put this 10, if you don't put this 10 as a closing stock, then your debit and credit does not match. What matching concept says? Your expenses should be matched with income or revenue. And you can understand, if you don't put this 10 as a closing stock, if you don't put this 10 as a closing stock, then your trading account is incomplete. Your both side does not logically match. And therefore, entry of closing stock, we need to pass due to matching concept. Due to matching concept. Now, next year, say for example, this 10 will go as a opening stock in the next. You purchase 50 units, you sell 55. Now, if I don't put this closing stock, right? Okay, even if I don't put this 10, I don't put this 10 as opening stock, then you will say, sir, we purchase only 50. How we can sell 55? We purchase only 50. How we can sell 55 unless you carry forward this 10 as a opening stock. As a opening stock. So when you carry forward this 10 as an opening stock, 50 is your purchase. So you have 60 units available for sale. You have 60 units available for sale. From that you sold out 55 and 5 is your closing stock. So guys, you can say the entry of opening and closing. The entry of
opening and closing stock is required for the matching concept. For the matching concept. Otherwise, your trading account will not show the correct GP. Will not show the correct GP. So guys, we can say that finally the entry of closing stock and opening stock is due to matching concept. Is due to matching concept. ओके अगर हम क्लोजिंग ओपनिंग नहीं रखेंगे तो हमारा ट्रेडिंग का दोनों साइड मैच होने वाला नहीं, and therefore profit will be wrong, right? Therefore we need to have a entry of closing and opening stock. Okay, yes, 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 Manpreet, you are correct. Deepa, you are correct. हाँ, okay, Switi, you are correct. Piyush, Surya, it is clear. Okay. Deepak Bhai, Kumar, Om, Riddhi, yes, Aryan, Mariam, okay. So guys, opening closing stock entries required for the matching concept. यहाँ तक clear है guys? Can we discuss the next example of matching concept? राज, आप कुछ भी चिंता मत करो, 100% हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, ठीक है? यस यस डियर. हाँ विशाल, जय हिंद. प्रॉपर जय हिंद कल कर लेंगे हम, ठीक है? ओके. Now guys, now I am discussing two more things which is very much easy but important. Now say for example this is your profit and loss account. Okay, this is your profit and loss account. If you recall guys, we have very simple adjustment of outstanding salary. We have paid 1000 per month for 11 months, right? And what we are doing always, we are doing 1 month outstanding. Okay, and total 12,000 we write in profit and loss account. Sorry. So if you recall your very simple example of salary outstanding, 11 month salary has been paid, so you will debit 11,000 in profit and loss account. You are adding 1 month salary which is unpaid, as a outstanding salary, right guys? As a outstanding salary, which is also known as unpaid salary. Yes guys, and then 12,000 will be total debit in P&L. Now guys, can you tell me how and why you are debiting this 1,000 in P&L? Whatever you know, tell me fatafat, just in 10 seconds. Why you are debiting 1,000 as an outstanding salary? Why we should debit? एक महीने का सैलरी हम क्यों डेबिट करते हैं पीएल में? Why? फटाफट गाइस. Yes, Nidhi, it is same as school level. I told you initially. फटाफट गाइस, जल्दी. Alisha, Prajakta, Riddhi, Piyush, Dhruv, Mariam, Vishal, tell me फटाफट. एक महीना जो हमने पे नहीं किया और सैलरी हम डेबिट क्यों करते हैं? फास्ट गाइस. Okay, so Komalpreet said because it is of the current year. Okay, Aditi, liability. Ruchika, expenses. Varun, expenses. Miss Gupta, Chandana Gupta, yes, it is correct, profit and loss. Apuro, accrual concept, very nice. Yashi, because it is of our this year expenses. Okay, Imrana, Bishit,
Pavan, Shana, okay, wow, great. We record incurring expense to yes, perfect, perfect, perfect. Accrual concept बिल्कुल सही है. Because we calculate for a whole year. Yes. So we can say, friend, whatever you say is correct. आपने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि आप अक्रूवल बोल रहे हो, आउटस्टैंडिंग बोल रहे हो, एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर बोल रहे हो, टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट बोल रहे हो. ये बिल्कुल सही बोल रहे हो. सर एक्सपेंसेस इस साल का है तो मुझे इस साल में लिखना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो. हाँ, अक्रूवल का लायबिलिटी बिल्कुल सही बोल रहे हो. बट नाउ आपने जो बोला फ्रेंड, उसी को अगर मैं कन्वर्ट करूं मैचिंग कंसेप्ट में, ध्यान से वर्ड सुनना, ध्यान से सुनना फ्रेंड. आपने बोला उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इन्हें मैचिंग कंसेप्ट. जो आपने बोला उसी को कन्वर्ट कर रहा हूं इन्हें मैचिंग कंसेप्ट. ओके, तो मैचिंग कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि सर वी नीड टू डेबिट, वी नीड टू मैच आवर एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू, इनकम एंड बेनिफिट. रेवेन्यू, इनकम एंड बेनिफिट. आपने आपके एम्प्लॉइज से 12 मंथ काम करवाया. सिंपल, देखो सिंपल. You have taken benefit of your employees for your work, office work for 12 months. अगर अगर benefit, now see the very important line, very important line guys, see very important line, very important line guys, very important line. I am once again telling you, okay, expenses should be matched with revenue, income एंड बेनिफिट एंड बेनिफिट एंड बेनिफिट. आपने एम्प्लॉय से 12 मंथ्स का बेनिफिट लिया, 12 मंथ्स काम करवाया. इफ आई नीड टू मैच एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, देन if benefit is of 12 months, if benefit is of 12 months, उन्होंने मेरे वहां 12 महीना काम किया, मैंने उनसे 12 महीना काम करवाया, तो एक्सपेंस भी होना चाहिए ऑफ 12 मंथ. इफ बेनिफिट इज ऑफ 12 मंथ, then expenses also should be 12 month. Whether I have paid or not paid, least concern, but I have to debit 12 month expenses because I have taken benefit of these employees for 12 month. It is a crystal clear concept of matching. Then guys, is it fine? आपने उनसे 12 महीना काम करवाया. यस 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 अदिति, परफेक्ट. हमने उनसे सर्विस 12 महीने ली, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. यस, therefore expenses should be of 12 months. Therefore expenses should be of 12 months. Done guys? Very nice. Okay, now let's go to the next very simple example. I am talking about insurance expenses, जो आपने स्कूल लेवल पे बहुत सीखा है. Right guys? Okay, so you paid insurance expenses 1200, और क्या लिखा है? It is paid up to the June. कहां तक पे किया है? Up to the June. Up to the June. June 23, say for example, right? और आपका ईयर खत्म होता है मार्च 23. तो आप रिकॉल करोगे आप क्या करते थे? सर अवर ईयर एंड is March 23. We have paid till June 23. So 3 months prepared guys. 3 months prepared, 3 months advance we can say. Yes, correct, correct, you are correct guys. 3 month advance, जिसको हम बोलते हैं prepaid. Right guys? So you are supposed to minus from this
And what will be filed in P&L? 900. Simple. You have done this so many times. You have done this so many times, right? So now tell me फटाफट guys, ये आपने किया हुआ है स्कूल लेवल पे, आपको पता भी है. ओके, लेकिन वंस अगेन अब मुझे हो सके तो मैचिंग कंसेप्ट के लॉजिक से बताओ व्हाई वी आर डिडक्टिंग दिस, व्हाई वी आर डिडक्टिंग दिस. ओके, फटाफट इफ यू कैन टेल मी विथ अ लॉजिक ऑफ मैचिंग कंसेप्ट. ओके, और मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट लाइन यो. यस, टेल मी गाइस, we are deducting 300 insurance expenses from 1200. You know it is प्रीपेड एडवांस माइनस करना है, सब पता है. लेकिन मुझे बताओ कि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से क्या आंसर दोगे इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन. फटाफट गाइस, फटाफट, गिविंग यू ओनली 10 seconds, गिविंग यू ओनली 10 seconds गाइस, बी फास्ट. ओके, next year expenses, it is of next year because it is of next year because it is prepaid of next year. Yes, yes. Some student tell the perfect answer. Very good. Yes, Amit. Perfect answer. Yes, Angel Chawla. Perfect answer. Yes, Om. Yes, Komalpreet. Perfect answer. Suhana. Perfect answer. Yes, Miss P. Amene. Perfect answer. Okay. Yes. हाँ, गर्व गर्व परफेक्ट. मोहम्मद परफेक्ट. ओके, सो बाकी कई लोग परफेक्ट बोले, लेकिन बहुत लंबा लिस्ट है, बट यू गेट इट perfect. Soumya, perfect. Because, sir, the benefit of 3 months, the benefit of 3 months, is it not of current year? Benefit of 3 years is of the next year. And sir, you have said that your expenses should be matched with revenue, income, or benefit. Your expenses should be matched with income, revenue, or benefit. Sir, benefit, if benefit is in next year, if benefit is in next year, I should book expenses not in current year but in next year, because April, May and June benefit is in next year. So expenses should be next year. So this 300 deducted from current year expenses and will be shown as a expenses in a next year because benefit is in next year. Clear, guys? Is it clear? Can we go to the next example, guys? Is it clear? Yes, Vidisha, correct. Piyush, correct. Manish, correct. Can we go further, guys? Can we go to the next point? Can you go to next example, guys? Okay. Thank you, guys. Thank you. Perfect. Perfect. You are perfect. Okay. And now, very important, depreciation. Very important, depreciation.
Say for example, you purchase the asset of rupees 1 lakh. You purchase the asset of rupees 1 lakh. And it is estimated that, sir, this asset will run for 10 years. We will use the asset for 10 years. So what do you do? Sir, 1 lakh divided by 10 years. So depreciation will be 10,000. Depreciation will be 10,000. Okay. So this will be my expenses. 10,000 will be my expenses. Okay. So depreciation 10,000 will be my P&L expenses. In balance sheet 1 lakh minus 10, 90,000. This you know. मुझे पता है, आपको पता है कि सर 1 लाख एसेट का कॉस्ट है, डिवाइड बाय 10 साल करेंगे, एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 आएगा, हम पीएल में 10,000 डेबिट करेंगे, बैलेंस शीट में 1 लाख माइनस 10 करके 90,000 दिखाएंगे. मुझे पता है कि ये आपको पता है, मुझे पता है कि ये आपको पता है, यू नो दिस. बट नाउ वंस अगेन गाइस, गिविंग यू 10 seconds, let me know if I want to explain the same story of this depreciation by matching concept logic, what you can explain. Fatafat guys, this is last example. What you can explain? Fatafat guys, tell me. As per the matching concept criteria, this 10,000, explain me in 10 seconds. Fatafat guys. Fatafat guys. Yes, Rohit, you are correct. Yes, Apurva, you are correct. Fatafat guys, only 10 seconds. Yes, यहाँ मैंने correct. दीपक भाई correct. Approach correct. Mariam correct. Nitin correct. Yes, Anjali correct. Okay, O is correct. Fine. So we can say in a very simple one line, if asset benefit is of 10 year, listen carefully. If asset benefit is of 10 year, if asset benefit is of 10 year, then expenses also should be debited not in 1 year but in 10 year. 1 लाख का एसेट खरीदा जिसका बेनिफिट 1 साल में खत्म नहीं होगा, जिसका बेनिफिट आने वाले 10 साल तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक ही साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेयर नहीं करेगा ना. अगर बेनिफिट 10 साल का है, अगर बेनिफिट 10 साल का है, अगर बेनिफिट 10 साल का है, तो एक्सपेंसेस भी आने वाले 10 साल तक डेबिट होने चाहिए. जितने साल का बेनिफिट उतने साल का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए. अगर बेनिफिट 10 साल का है तो खर्चा भी 10 साल में डेबिट होना चाहिए. Is it clear, guys? Okay. And therefore, we will not debit 1 lakh in one P&L. We will debit 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 in next 10 profit and loss account. अगर बेनिफिट 10 साल का है तो एक्सपेंसेस भी 10 साल में डेबिट होने चाहिए, ऐसा मैचिंग कंसेप्ट कहता है. यस गाइस? Yes, Yashi, it is a non-cash expenses, which is benefit of 10 years. Perfect, perfect. Yes, Bidisha, yes. Clear, guys? The last example, can we go to the next point?
Can we go to next point, guys? Okay. Okay, fine. And now, guys, the last point is exception. Exception. Yes, it is exception. Okay. यस अंकित, यस अनिकेत, यस अनिकेत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अंकित. परफेक्ट है. प्रूडेंस कंसेप्ट. Okay, done, guys. Now the exception. Now what does this exception means? Guys, exception means ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता. मतलब ये दो तीन एग्जांपल ऐसे हैं जहां पर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है. मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है. ठीक है गाइस? ओके. नाउ व्हाट दिस इट सेज, इफ यू सी इट, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल फायर अकर्ड एंड डैमेज द प्रॉपर्टी और गुड्स. उसका जो लॉस हुआ वो लॉस हम पीएल में डेबिट कर देंगे, मैचिंग कंसेप्ट नहीं देखेंगे. या तो सम डेट बिकम बैड, मतलब बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स, बैड डेट्स हो गया, वो लॉस बुक करना है तो भी हम मैचिंग कंसेप्ट नहीं देखेंगे. नाउ गाइस लिसन दिस next 2-3 lines very carefully. Okay, listen very carefully. I will explain in both the language, English and Hindi. Okay, एकदम ध्यान से. Say for example, your goods has burned, your goods has theft, your goods are lost in accident. Okay, so what you are doing, say for example 10,000 rupees goods has been fired or damaged or theft. Okay, तो आप what you are doing, you will debit P&L account assuming insurance coverage is zero. Insurance coverage is zero. So what you will do, you will debit this 10,000 loss in P&L. Now what matching concept says, if you want to debit something in P&L, if you want to debit something in P&L, then there should be some benefit, there should be some income, there should be some revenue. But sir, this is my complete loss. In this, I don't have any benefit. I don't have any revenue. I don't have any income. It's a loss. It's a completely damaged, fire or theft goods. So matching concept said you are correct. If you want to debit the loss of theft or loss of damage or loss of accident, you can't have any benefit. And therefore we are allowing you can debit the loss even if there is no income, no benefit, no revenue. Therefore it is known as exception. Now Hindi, आपका 10,000 का गुड्स जल गया, चोरी हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. ओके, तो ऐसी बात है. और इंश्योरेंस कवरेज जीरो है. ऐसा मान के चलो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वो जीरो है. तो सर 10,000 का जो लॉस हुआ वो तो मुझे पीएल में डेबिट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो कर दो.
लेकिन सर मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर मुझे पीएल में कुछ डेबिट करना है तो सामने उसका रेवेन्यू बताओ, इनकम बताओ, बेनिफिट बताओ। सर ये तो लॉस है सर, ये तो चोर चोरी करके ले गया, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। देयरफॉर मैचिंग कंसेप्ट कहता है भैया आप डेबिट कर दो, भले सामने कोई इनकम ना हो, भले सामने कोई रेवेन्यू ना हो, भले सामने कोई बेनिफिट ना हो, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन टू द मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब ये लॉस डेबिट करने के लिए कोई रेवेन्यू, कोई बेनिफिट, कोई इनकम देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर गाइस? सो यू कैन डेबिट द लॉस even though there is no income, no benefit, no revenue. Yes. First exception done, guys. Yes, Komalpreet, absolutely correct. Very nice. Means matching concept does not apply to such type of abnormal loss. बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो. Yes. हाँ, हमें ऐसे सारे लॉस डेबिट करने हैं बिकॉज इसमें कोई भी प्रकार का बेनिफिट होता नहीं है. करेक्ट, यू आर करेक्ट. यस. हाँ, अपवाद. यस विशाल, इट्स अपवाद. यस. यस स्टूडेंट, गॉट इट गाइस. फर्स्ट एग्जांपल गॉट इट. कैन वी गो टू द स्मॉल नेक्स्ट एग्जांपल? क्लियर गाइस? थैंक यू स्वीटी, थैंक यू निकिता, थैंक यू मानसी. नहीं चलिए. यस अब्दुल, सेम. बट अब्दुल, दिस matching concept is for expenses. Therefore, we will talk about expense and losses. Yes, yes अंकिता. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहेगा? एक्सपेंस को मैच करना है रेवेन्यू से. तो हम एक्सपेंस एंड लॉस की बात करेंगे, गेन की बात नहीं करेंगे अभी. ओके अंजलि, फाइन. थैंक यू. एंड द लास्ट पॉइंट इज, एंड द लास्ट पॉइंट इज, इसी में लास्ट पॉइंट इज, yes yes Gautam, the same story. Charity and sample, same story. Okay, no benefit, it's our emotion. Debit करके खत्म करो. Okay, and the last story is bad debts. Bad debts पहला आएगा इंग्लिश में फटाफट. You have sold someone 10,000 goods to Mr. X and Mr. X cannot pay the amount, so sale become bad. Okay, वो he become insolvent, he doesn't have any money and he is now insolvent and you are not able to get a single rupees from 10,000. So as you know, it's a bad debts. And what you are doing? Sir, bad debt is my loss. I will debit to my P&L. Bad debt is my loss. I will debit to my P&L. Now once again, matching concept क्या कहता है? Sir, it says if you want to debit the loss, what is benefit? You will say, sir, there is no benefit, there is no revenue, there is no income. The gentleman become insolvent, sir. No benefit, no revenue, no income. I have to debit my loss to find out the correct profit. So you need to debit this one type of abnormal loss of bad debts in P&L, even if there is no revenue, no income, no benefit. Now Hindi, आपने किसी को 10,000 का सेल किया, भाई साहब पैसे नहीं दे पा रहे हैं, भाई साहब इंस्टॉलमेंट हो गए, आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, भाई साहब ने हाथ खड़े कर दिए, सर पैसा नहीं है, जो करना है वो कर लो, मेरे पास नहीं पैसा है, आई एम बैंक करप्ट. तो आपको तो 10,000 का लॉस डेबिट करना पड़ेगा बुक में ऐसे बैड डेट्स. ओके, सो आपने 10,000 का लॉस डेबिट कर दिया इन बुक ऐसे बैड डेट्स, बट सामने कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई रेवेन्यू नहीं होता, कोई इनकम नहीं होता, इट्स ए प्योरली लॉस. तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है भाई साहब ऐसे वाले लॉसेस में मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे इग्नोर मारो. मुझे पता है कि बैड डेट्स वाले लॉस में सामने कोई इनकम, कोई रेवेन्यू, कोई बेनिफिट होता नहीं है. बट टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट you should debit 10,000 bad debts. So bad debts is a loss जो कंप्लीट लॉस है.
सामने कोई इनकम, कोई बेनिफिट, कोई रेवेन्यू नहीं होता है, देयरफॉर उसको डेबिट करना पड़ेगा एंड मैचिंग प्रिंसिपल को इग्नोर करके डेबिट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट. इज इट क्लियर गाइस? कैन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? थैंक यू साक्षी. थैंक यू अमित. यस विदिशा, इट इज कंप्लीट लॉस. बिल्कुल सही है. यस यस रोहित. यस मानसी. यस ओम. यस इंद्रजीत. असामान्य हानि. दैट इज करेक्ट. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. यस अमित, अपने दिल पर पत्थर रख के बैड डेट्स को डेबिट करना पड़ेगा. बिल्कुल सही है सर, बिकॉज सामने कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इनकम नहीं, दिल पर पत्थर रख के लॉस डेबिट करना पड़ेगा. बिल्कुल सही है. थैंक यू रिद्धि. परफेक्ट गाइस, यू गाइस परफेक्ट हो, बराबर है. अमित भाई अच्छा बोल रहे हो आप, दिल पे पत्थर रख के डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सही बोल रहे हो. थैंक यू दीपक भाई. थैंक यू. ओके, सो गाइस दिस मैचिंग कंसेप्ट is over and out. Okay, so I can now switch over to the next point. Okay, okay, fine. Now the important guys, whatever pages and whatever points I am discussing, you can write down or you can tick in your module also. We need to first cover this much point only. We will first cover this much point only. Okay, which are important. And what I am not discussing or what I am saying, you can ignore. Okay, guys. And now the important is closing inventory and its valuation. So guys, this is very important. Closing inventory and its valuation. पहले मुझे फटाफट ये बताओ guys, closing inventory, what when it is given an adjustment, if you recall any question of final account, if you recall any question of final accounts, your first adjustment is generally of closing stock, right? And closing stock is there in adjustment, and you need to have a two effect of this. Okay, मुझे बताओ फ्रेंड, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है? एडजस्टमेंट्स की कितनी इफेक्ट होती है? हाँ गर्व उठा सकते हैं, लेकिन हम नहीं उठाएंगे, सरकार उठाएंगे. बिल्कुल सही है भाई, तू प्रैक्टिकल बंदा है. परफेक्ट है यार. हाँ मैं इफेक्टिव पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ, इफेक्टिव पूछ रहा हूं. यस यस यस, वही इज करेक्ट. मिनिमम टू इफेक्ट, ये इसलिए मैंने ये पूछा है. सबने बोला टू इफेक्ट, टू इफेक्ट, टू इफेक्ट. नहीं नहीं, सॉरी, every adjustment has minimum to effect. To effect नहीं, minimum to effect.
हाँ, समझ में आया? टू इफेक्ट वालों समझ में आया? मिनिमम टू इफेक्ट नहीं, मिनिमम टू इफेक्ट। देयर आर मेनी एडजस्टमेंट जिसकी तीन इफेक्ट होती है, चार इफेक्ट होती है। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट कहां पर बताओ जल्दी। यस ओम, यू आर करेक्ट। यस अमित, यू आर करेक्ट। हाँ अनुष्का, यू आर करेक्ट, मिनिमम टू इफेक्ट। विशाल, आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट, नॉट वैल्यूएशन क्राइटेरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट इफेक्ट। यस रूहानी, आर्यन आप मैसेज भेजो, मैं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। यस अदिति। यस। यस कोमलप्रीत। हाँ यस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, बिल्कुल सही है गाइस। ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट ओपनिंग। सोमनाथ, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भाई? मस्ती मस्ती। कौन सा पीएनएल आएगा ट्रेडिंग के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए? ओके फाइन, परफेक्ट है, ऑल आर परफेक्ट। सर ट्रेडिंग में क्रेडिट एंड पीएल में एंड बैलेंस शीट में असेट साइड, बिल्कुल सही है। अब उसका एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया है, क्लोजिंग स्टॉक का एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास मैं क्लोजिंग स्टॉक की दो तीन वैल्यू दूं, ओके, कॉस्ट प्राइस दूं, मार्केट प्राइस दूं, वो सब दूं, दो प्राइस देते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करने का? हाउ वी शुड वैल्यू our closing stock? If you are given cost price and market price both, how you will value the same? Tell me guys, how you will value the same? How you will value the same? कौन सी वैल्यू दिखाओगे बैलेंस शीट में? If I have given you cost price as well as market price, कौन सी वैल्यू दिखाओगे बैलेंस शीट में? फटाफट गाइस। यस वैदेही करेक्ट। यस रूहानी करेक्ट। कोमलप्रीत करेक्ट। यस दीपक भाई करेक्ट। रोहित इज करेक्ट। राजू इज करेक्ट। पार्थ इज करेक्ट। सोमिया इज करेक्ट। भूमिका इज करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनानी भी इज करेक्ट। अनिकेत इज करेक्ट। ओम गुप्ता इज करेक्ट। अनिकेत ओके, ऑलमोस्ट ऑल आर करेक्ट। कॉस्ट और एनआरवी, मार्केट प्राइस का दूसरा नाम होता है एनआरवी, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, बिल्कुल सही जा रहे हो, विच एवर इज लेस। कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। बट बता सकते हो कि ऐसा रूल किसने कहा? ऐसा रूल कहां से आया, कौन बोला ऐसा करने का? ये जो बोला आपने बिल्कुल सही है, बट व्हाई इट इज सो? टेल मी व्हाई इट इज सो? विच कंसेप्ट, विच प्रिंसिपल ये कहता है? जल्दी बताओ फ्रेंड जल्दी। विच कंसेप्ट सेज दिस? बी फास्ट। विच कंसेप्ट सेज दिस? कॉस्ट और एनआर विच एवर इज लेस, ऐसा किसने कहा? अगर याद हो थोड़ा सा कंसेप्ट, विच कंसेप्ट सेज दिस? हाँ सोवन सही बोल रहा है, बस तेरा नाम भी ले लिया। क्या बात है, कोमलप्रीत बिल्कुल सही है, चंचल बिल्कुल सही है। ES9, क्या बात है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, आप तो यार सीधा इंटर लेवल पहुंच गए. विच कंसेप्ट? यस रूहानी करेक्ट, अदिति करेक्ट, यस अंशिका करेक्ट, एएस टू इन्वेंटरी, क्या बात है, करेक्ट. विशाल इज करेक्ट, वुडन, ओके, परफेक्ट है गाइस. इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है. इट इज ड्यू टू दी प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम है कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव कंसेप्ट. यस, दोनों सही है. एंड देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड दोनों में से जो कम है. कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कंसेप्ट बिल्कुल सही है. हाँ, अकाउंट सारे इन्वेंटरी भी कहता है, वो भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है. देयरफॉर वी नीड टू डिसाइड जिसमें से दो कम है, जिसमें से दो कम है उससे वैल्यू करना चाहिए. सो इफ यू कैन सी दिस सिंपल एग्जांपल, अगर कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 90,000 है, तो हम नक्की करेंगे दोनों में से 90,000, राइट गाइस, बिकॉज 90,000 इज लेस, राइट, बिकॉज 90,000 इज लेस. लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 1,10,000 है, हाँ, तो फिर हम 1 लाख लेंगे. यस, तो फिर हम 1 लाख लेंगे. यस गाइस, बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी whichever is less, whichever is less, right? So from this 1,90,000 I will take 90,000. लेकिन अगर 1 लाख और 1,10,000 है, then I will take 1 lakh, because cost और NRV whichever is less, whichever is less. अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 20% लेस है, हाँ, तो फिर सर मुझे कॉस्ट प्राइस को 20% माइनस करके 80,000, आई नीड टू कंसिडर 80,000, राइट. 1 लाख माइनस 20,000 मतलब 80,000, because my market price is less by 20%. 1 lakh minus 20%, that is 80,000. So you are absolutely correct. Cost or market price, whichever is less, and this is due to the matching concept. This is due to the matching concept, or better ways, prudence and conservatism. You are absolutely correct. Prudence and conservatism. दो प्राइस में से जो कम होगी उसको चूज करना है. सो सर ये जो कम वाला प्राइस होगा 80,000, वही जाएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, वही जाएगा बैलेंस शीट में सेट साइड. बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो गाइस. 80,000 करेक्ट, करेक्ट, 80,000 करेक्ट. क्या बात है यार, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, परफेक्ट. हाँ, लॉस इज recorded immediately and future profit is ignored. Future loss is recorded immediately and future profit is ignored. Correct guys, correct, you are correct guys. Yes, perfect, it is perfect. Okay guys, perfect, perfect. Record the losses. Yes guys, yes, definitely I will give you break for 5 minutes. हर रोज जैसे होता है वैसा. Don't worry about this. Just let me confirm with the technical team.
Just a minute. Yes, technical team, if you are there, can we have break of 5 minutes?
Yes, yes, I did it. Now clear? Can we start? I hope camera, screenshot save and audio video clear. Yes, Ajit bhai, can we start? Okay, thank you. Welcome back, guys. Yes, now it is good afternoon. Okay, okay, perfect. So we are here closing inventory, right? Whichever is less. Whichever is less, you are bilkul correct. Now, friend, this is important point. If closing stock is in trial balance, if closing stock is in trial balance, yes, guys, if closing stock appears in trial balance, okay. Now, friend, remember very carefully that it has only one effect. It has only one effect. That is in balance sheet asset side. Please write it very carefully here, guys. Please write it very carefully. If closing stock is given in trial balance, because as you know, if anything is given in trial balance, only one effect. That is, here it is only asset side in balance sheet. And please, please remember this, guys. Please. No effect in trading account. No effect in trading account. Yes, guys. No effect in trading account. Okay. It is only in balance sheet. It is only in balance sheet. And this is what we discuss. Cost or NRV, whichever is less. Cost or NRV, whichever is less. So if you are given closing stock in trial balance, it means it will have only one effect. That is in balance sheet. Trading account is not affected. Okay. Then guys, yes, Prasujya, thank you.
हाँ, यस इंद्रजीत, ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट नहीं लेंगे. इट इज ओनली इन बैलेंस शीट इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. एंड दिस क्राइटेरिया वी डिड whichever is lower. Okay, now friend, switch over to the next important point. This format you just go through once. Okay, just go through once this format, guys. PL format, you know, just go through once. Not that much important. Okay, now friend, a small adjustment but important adjustment, guys. Please, from this all we need to understand. Please concentrate, guys. Yes, drawing. As you know, guys, drawing is my personal expenses. And therefore, yes, important guys, it is reduction from capital. It is reduction from capital. So as you know, friend, in balance sheet, capital minus drawing, right guys? So drawing being a personal nature expenses always deducted from the capital. Clear? Always deducted from the capital. Simple? Right? Now friend, remember very carefully guys, income tax. In case of sole proprietorship, income tax paid is a personal expenses. So it is same as drawing. It is same as drawing. Income tax expenses is a personal expenses and therefore it is same as drawing. It is same as drawings. Okay. ये ओनर का पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए करेंगे कैपिटल में से माइनस. कैपिटल में से माइनस. क्लियर गाइस? यस, करेक्ट. क्या बात है, वेरी नाइस. Perfect guys. Can we go further guys? Okay. Discount received, discount allowed, as you know, very simple. It is part of P&L, right? One is our income, one is our expenses. Okay. Discount received is our income, allowed is in our expenses. Rebate guys, rebate. You can say simple, the effect is same as discount expenses. Please write it. Rebate is our expenses. Effect is same as discount expenses. पीएल में उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. पीएल में क्या करेंगे उसको गाइस? डेबिट करेंगे. क्लियर? Rebate is one type of discount given to customer on his quantum purchase from us.
It is our expenses. It is our expenses. Yes, बिल्कुल सही है. Okay, guys. Bad debts. Yes. Bad debts. It is our loss. अभी सीखा हमने. It is our loss. PL debit side. Simple, guys. It is our loss. PL debit side. And bad debts recovered. Please carefully. Bad debts recovered is our income. It is our income. And therefore, P&L credit side. It is P&L credit side. Okay. Bad debts our loss, record our profit. Now, this is extremely important point. Okay. In case of provision of for bad debt is already prepared. What is the word? Already prepared. Then bad debt should be first debit to BDR account. Please write it, guys. Bad debt reserve. और यहां क्या लिख दो आप? So the final sentence is, if provision for bad debt is given in trial balance, if provision for bad debt is given in trial balance, then bad debts should be debit to provision, not to the P&L. So यहां जो एंट्री थी क्या थी फ्रेंड? थी यहां किसको डेबिट किया था? पीएल को डेबिट किया था. उसकी जगह यहां किसको डेबिट कर रहे हैं? प्रोविजन को डेबिट कर रहे हैं. ओके. ओके. तो क्या लिखना है आपको? इफ provision for doubtful debt is given in trial balance, is given in trial balance, is given in trial balance, then bad debts will not debit to P&L. It is debit to the provision account. It is debit to the provision account. Clear, guys? Please write one sentence very carefully. In case provision is given in trial balance, अगर आपके पास bad debts का provision trial balance में है, मतलब आपने पिछले साल प्रोविजन क्रिएट कर दिया है, तो बैड डेट्स जो होगा वो पीएल में डेबिट नहीं करेंगे, प्रोविजन के सामने डेबिट करेंगे. प्लीज राइट इट गाइस वेरी केयरफुली. यस अमित, यू आर राइट. मुझे खुश हुआ. यस वही सेम एज 12th क्लास, नथिंग न्यू. ओके. Please write sentence very carefully. This sentence very carefully. In case provision for bad debts already prepared, मतलब given in trial balance, then bad debts will be debit to provision. ये दोनों एंट्रीज को आप एरो कर दो. लिखा फ्रेंड? प्लीज.
ओके नाउ फ्रेंड, हाँ फ्यूचर के लिए पहले से सोच के रखा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे बताओ गाइस, आगे बढ़ने से पहले, when you are given adjustment of bad debts, bad debt reserve, discount reserve, bad debts, bad debt reserve and discount reserve, then we need to adjust this bad debts, bad debt reserve and discount reserve in P&L as well as balance sheet. So in your adjustment, it is said that, say for example, provide bad debts 5,000, provide bad debts 5,000 and provide bad debt reserve 1% and discount reserve 2%. Small adjustment. Okay. तो मुझे बताओ कि for this adjustment, first of all, from where we will start to write, either from balance sheet or P&L. Bad debts, bad debt reserve, discount reserve सबसे पहले कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं कि पीएल में लिखते हैं? सबसे पहले कहां लिखते हैं बताओ गाइस फटाफट, वेयर? यस गाइस, फटाफट गाइस, सबसे पहले कहां लिखते हैं एडजस्टमेंट? सबसे पहले कहां लिखते हैं? बैड डेट रिजर्व, वेयर वी राइट फर्स्ट, बैलेंस शीट और पीएनएल? सबसे पहले एडजस्टमेंट कहां करते हैं? आपको बोल दिया कि आपके डेटर्स 50,000 है, से फॉर एग्जाम्पल डेटर्स आपके 50,000 है, बैड डेट्स 5,000 है, बीडीआर मेंटेन करना है 1% एंड डीआर मेंटेन करना है 2%। तो आप सबसे पहले ये अमाउंट कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में कि पीएल में? सबसे पहले कहां लिखते हो? ओके, 80% आर करेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट में। ओके, मुझे बताओ बैलेंस शीट में फॉर्मेट क्या होता है? शुरुआत कहां से करते हैं? सबसे पहले क्या माइनस माइनस कुछ करते हैं, याद हो तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या? दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, क्या होता है जल्दी? शुरुआत करेंगे डेटर से, डेटर्स, यस शुरुआत करेंगे डेटर से। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे फटाफट गाइस? डेटर्स माइनस व्हाट, माइनस व्हाट, माइनस व्हाट, फटाफट जल्दी। डेटर्स माइनस व्हाट, माइनस व्हाट, माइनस व्हाट? डेटर्स माइनस 3 पॉइंट्स होते हैं, फटाफट बताओ। डेटर्स माइनस 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 3 बातें, क्या होती है 3 बातें जल्दी गाइस? सबसे पहले क्या माइनस करते हैं डेटर्स में से? यस पार्थ, पूरा बताओ। यस वरुण, यू आर करेक्ट। बिपाशा, ध्रुव, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स। इसमें कैपिटल कहां से आया, प्रॉफिट कहां से आया? डेटर्स माइनस क्या करेंगे वो पूछ रहा हूं। यस प्रेम, करेक्ट। कोई बात नहीं स्वीटी, याद कर लेंगे 2 मिनट में। यस विदिशा, करेक्ट। यस निकिता, करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। यस प्राजक्ता, रोहित, चंचल, ओके। सो गाइस, it is like this. Please write it guys, please write it guys, please write it guys.
This is the format, guys. You will start with debtors, please. When we'll start long questions, it will be there. So once again, I will not repeat. Please write carefully. We'll start with debtors plus or minus rectification. Yes, first plus or minus rectification. So you will get correct debtors. You will get correct debtors. Please write carefully. Please write carefully. From this, here everything will be of adjustment. Everything will be of adjustment. Okay. This is bad debts adjustment. It is BDR, bad debt reserve adjustment, and discount reserve adjustment. Yes, guys. Please write carefully. Please write it carefully. First is bad debts adjustment. Please write carefully. Second is bad debts reserve adjustment. And third is discount reserve adjustment. Yes, guys. And then आएगा उसको बोलेंगे फाइनल डेटर्स. ओके, सो प्लीज राइट इट केयरफुली. शुरुआत कहां से करेंगे? डेटर्स प्लस और माइनस रेक्टिफिकेशन. सो वी विल गेट करेक्ट डेटर्स. फ्रॉम करेक्ट डेटर्स 3 points are minus. Bad debts adjustment, BDR adjustment, and DR adjustment. Clear, guys? Clear, guys? हाँ सोवन करेक्ट है तेरा, चिंता मत कर. तेरा नाम भी बोल दिया आप तो. ओके, बैड डेट्स एडजस्टमेंट, बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट. ओके देव? यस स्वीटी, नाउ यू विल रिमेंबर. Okay, clear, guys? Can we go further? Dave, it is discount reserve. Okay, discount reserve. Okay, now this all figure will go to the P&L. In P&L also there is a specific format. Okay, so tell me in profit and loss account from where we will start. सबसे पहले क्या लिखते हैं? PL डेबिट साइड. सबसे पहले क्या लिखती हैं? चार बातें आती है. चार बातें. this minus that. PL में डेबिट साइड. फटाफट बताओ शुरुआत कहां से करेंगे? PL में शुरुआत कहां से करेंगे? जल्दी बताओ. PL डेबिट this plus this minus that. ऐसा होता है. चार बातें जल्दी बताओ गाइस, फटाफट. पीएल डेबिट साइड गाइस, फटाफट चार बातें जल्दी बताओ. शुरुआत कहां से करेंगे? पीएल डेबिट.
यस गाइस, डेबिट साइड ऑफ पीएल क्या लिखेंगे जल्दी? सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? थैंक यू सोहन, फटाफट गाइस। क्या बात है प्रेम, मजा आ गया, परफेक्ट। नवीन परफेक्ट। मृणालिका परफेक्ट। यस रूहानी परफेक्ट। प्रसुजिया परफेक्ट। ऑलमोस्ट ऑल आर परफेक्ट। क्या क्या बात है। लेस ओल्ड प्रोविजन। यस विशाल। यस यस यस, लेस ओल्ड प्रोविजन। यस यस यस, पुष्कर। ओके, परफेक्ट गाइस। कौशिकी। ओके, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाइक दिस गाइस। ओके, शुरुआत कहां से कर देंगे? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस। प्लीज राइट इट गाइस, प्लीज राइट इट। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, प्लीज राइट इट गाइस, प्लीज राइट इट। ओके, प्लस क्या करेंगे? बैड डेट्स एडजस्टमेंट। यस, परफेक्ट। प्लस क्या करेंगे? बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। यस, और माइनस क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने गाइस, वेरी गुड। Bad debt reserve trial balance. This is the final amount. Please write this very carefully, friends. Yes, guys, clear. कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, वेरी नाइस। परफेक्ट गाइस। बिट्टू, bad debts adjustment is further bad debts. Okay, bad debts adjustment is further bad debt. Okay, clear guys? So all provision is minus. Yes, Vishal, you are correct. Yes, Anushka, you are correct. Dear, ट्राई बैलेंस मतलब ओल्ड, रोहित ट्राई बैलेंस मतलब ओल्ड प्रोविजन, एंड एडजस्टमेंट मतलब न्यू प्रोविजन। ओके, गॉट इट रोहित? देव, ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। बड़े सम करेंगे तो इसी में से अमाउंट आएगा। आप लिख दो एक बार देव, आप एक बार लिख दो, बड़े सम आएगा, समझ जाओगे, डोंट वरी। यस यस विदिशा, ओल्ड प्रोविजन मतलब ट्रायल बैलेंस, इट इज डिडक्टेड। करेक्ट, यू आर करेक्ट। एंड सेव ऑफ डिस्काउंट। यस गाइस, प्लीज राइट इट। शुरुआत करेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट ट्रायल बैलेंस।
डिस्काउंट रिजर्व, एडजस्टमेंट एड, एंड डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस. So this is regarding discount and discount reserve. Please write it, guys. Please write it carefully. Discount allowed plus discount reserve adjustment मतलब new and discount reserve trial balance मतलब old. Same as bad reserve. Same. Yes, yes, Rohit, you can write. You can write. Don't worry. You can write. Old and new, you can write. The weightage is 10 to 15. Discount reserve means we create discount reserve. अगर फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़े, जैसे फ्यूचर बैड डेट्स के लिए वी क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व, फ्यूचर डिस्काउंट के लिए वी क्रिएट डिस्काउंट रिजर्व. अगर कोई डिटरेंट डिस्काउंट मांगा फ्यूचर में तो अभी से उसका प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, वो डिस्काउंट रिजर्व. मोहम्मद राइट, दिविशा वही समझाया. जैसे फ्यूचर में बैड डेट्स हो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं बैड डेट रिजर्व फ्यूचर के लॉस के लिए. सेम फ्यूचर में डेटर डिस्काउंट मांग सकते हैं तो वो लॉस के लिए क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिजर्व. राइट दिविशा एंड मोहम्मद, इट इज ओके. रोहित बजाज और दूसरा कौन सा था? हाँ, ये पूछा था मोहम्मद ने और दिविशा ने. मोहम्मद दिविशा, इज इट फाइन, इज इट ओके? लिख दिया फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू मोहम्मद दिविशा, थैंक यू. सो नाउ गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा इलस्ट्रेशन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, तो वो करके ला सकते हो. स्मॉल क्वेश्चन यही फॉर्मेट का कर सकते हो अपने आप. कैन यू ट्राई एट योर होम? होमवर्क में कर लोगे गाइस? ओके, लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल. सो गाइस प्लीज, ये स्मॉल एग्जांपल है गाइस, उसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपका होमवर्क है. आपको इसकी इफेक्ट देनी है बैलेंस शीट में और पीएनएल में. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. वैसे मैं क्लास में करवाता हूं लेकिन आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए तो आप लोग कोशिश कर सकते हो. ठीक है? यस गाइस, ले लिया स्क्रीनशॉट गाइस? कैन वी गो फर्दर फ्रेंड्स? हो जाएगा ना स्मॉल क्वेश्चन आपसे? श्रीनिधि बोला मैंने 10 to 20 मार्क्स. ओके, सी आपको क्या करना है गाइस, अभी जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया ये आपको इसी फॉर्मेट में इफेक्ट देनी है, बैलेंस शीट में एंड पीएनएल में. समझ गए गाइस? पूरा बैलेंस शीट पीएनएल टैली नहीं करना है, टैली कुछ नहीं होगा बिकॉज पूरा सब नहीं दिया. ओके,
So you will need to enter these amounts in this balance sheet format, right? And then in this P&L format. Okay, what are we discuss? Clear, guys? This is the question, right? Okay, let's move to the our module. So guys, this BDBDR we have done. Now please switch over to. So guys, this a small question is your homework. 3 is your homework. Small question, right? Now friend, please write only one word here on this page. Only one word. Please write accrued means outstanding. Just write this. Accrued means outstanding. Okay. And carry forward means prepared. Carry forward means prepared. Or you can say advance. Please write it, guys, very carefully. Please write it, guys. Carry forward means prepared or in advance. Or in advance. Okay. So please read this page very carefully, guys, when you revise the chapter. Okay. And this is very important, friend. Adjustment of inventory of material in hand. Okay. Which type of material we are talking about? Stationery material, ad material. Okay. So, say for example, you purchase stationery of rupees 1000 or you purchase ad material of rupees 1000. But at the end of the year, 200 rupees material are in hand. It's a closing stock. It's a closing stock. So what is the effect of this adjustment, guys? P&L and बैलेंस शीट. आपने परचेस कितना किया? 1000 रुपीज का, लेकिन कितना उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा? 200 का. सो जितना भी आपका स्टॉक बचा है वो आप एक्सपेंस में से करोगे माइनस, राइट? एंड जो आपने माइनस किया है वो जाएगा बैलेंस शीट में एज ए क्लोजिंग स्टॉक. Write it, guys. So such inventory will be reduced from the purchase in profit and loss account. Your expenses will be reduced and it will be on balance sheet asset side. It will be also on balance sheet asset side. It is known as a inventory on hand. Clear, guys? Inventory on hand of material. And you can see the small example also here. Okay. Opening stock plus purchase minus closing stock, and it will also in a balance sheet asset side. Clear, guys?
Clear? And this we have already discussed. This we have already discussed. Proven output, please write it. It is nothing but called bad debt reserve. It is nothing but it is bad debt reserve. The format what we discuss, right? Bad debt reserve. This is also we discuss. This is discount reserve. We have already done the formats. We have already done the formats. Discount reserve. This is also we have discussed, guys. And from next chapter, next lecture, we will start with this on 16 August 23. Okay. We will start this. On 16 August, we are meeting once again, same time. And we will start from this. Yes, guys. नहीं रोहित, अभी आंसर नहीं बताना है, आपको होमवर्क में करके लाना है. क्या बात है सूर्य कुमारी, सूर्या, हो जाएगा सर, हो जाएगा, टेंशन नहीं. नहीं नहीं, अभी अभी आंसर नहीं देना है. Okay, guys, see you. Have a nice time. I hope the things are clear to you. Okay. Thank you, Om. Thank you, all students. Once again, thank you for so much interactive, so much answer. And I hope on 16, when we will meet, you have done the homework and we will do the adjustment and we will do the long questions also. Goodbye, friends. Goodbye. Thank you. Jai Hind. Happy Independence Day in advance. Goodbye, friend. Goodbye. Thank you, Prem Kushwa.